Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. We have started the chapter sequence and series. In this chapter we have solved the exercises. Along with that we have solved the miscellaneous. The first question that we're going to discuss is question number 19 from miscellaneous exercise of the chapter sequence and series. Now, in question number 19, we have been given that the ratio of arithmetic mean to geometric mean of two positive numbers a and b is in the ratio m is to n. We know that if we have two numbers a and b, then their arithmetic mean is given by a plus b by 2 and their geometric mean is given by under root ab. Now, as per the question, the ratio of arithmetic mean to geometric mean is equals to m by n. So we are going to put the values here. Arithmetic mean, instead of arithmetic mean we'll write a plus b by 2 and here we're going to write under root ab. On simplifying this we have a plus b upon 2 under root ab equals to m by n. Now we'll apply componendo and dividendo rule that we have discussed in the previous video also. We have, if a fraction is there, say a by b equals to c by d, then once we apply this rule, we have a plus b upon a minus b equals to c plus d upon c minus d. तो यही रूल हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं. a plus b plus 2 root ab upon a plus b minus 2 root ab equals to, this side we will have m plus n upon m minus n. Clearly, when you see the numerator, it is the whole square of under root a plus under root b. And the denominator can be written as under root a minus under root b whole square. So that we have written here equals to m plus n upon m minus 1, m minus n. Now, if we have on one side of the equal, we have square term. So, when it will be removed, on the other side we'll have under root. So, we have from this term under root a plus under root b upon under root a minus under root b equals to under root of m plus n upon under root of m minus n. Since in the question we have to find the ratio of a is to b, so what we are going to do, we are going to apply the componendo and dividendo rule again, after which we will have c. This is the numerator, this is the denominator. First time we'll add them and then in the next part we will subtract them. So we have 2 root a upon 2 root b equals to this value. 2 will be cancelled from here. Squaring both the sides, a by b equals to square of this value, and once you square this value, you will have m plus under root m square minus n square upon m minus under root m square minus n square. So step by step you have to solve this, and thus we will have the ratio of a is to b that we have to show in the question as this value. Now we have question number 20, in which we have been given that a, b, c are three terms and they are in arithmetic progression. So we have 2b equals to a plus c. Similarly, it is given that b, c and d are in geometric progression. So we have c square equals to b into d. And the third point that is given is ki 1 upon c, 1 upon d and 1 upon e. These three terms are in arithmetic progression. So 2 times the middle term equals to sum of the x3. Then we will solve, we have named these statements and 1, 2 and 3. From third, we'll simplify this and we will have the value of d as 2ce upon c plus e. Now we have to show, in the question it is asked that we have to show that a, c and e are in GP. तो उसके लिए हमें ये शो करना होगा कि c square equals to a into e, that is square of the middle term equals to product of the extreme. This is the condition to show that three terms are in GP or geometric progression. तो फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट c स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू डी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस c बाई 2 दैट वी हैव रिटन हियर, एंड द वैल्यू ऑफ d इज 2ce अपॉन c प्लस e.
नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस, 2 विल बी कैंसल्ड, तब हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एज सून एज यू सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट वी हैव सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई, दैट इज स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म equals to product of the extreme terms. Therefore, we have A, C, E are in geometric progression. We have discussed questions that are similar to question number 21 in the previous exercises. So now we are going to solve question number 23. Now in the question number 23, we have to add a series. We have to find the sum of a series 3 plus 7, 13, 21 and so on up to n terms. Clearly, this series is neither in AP nor in GP. So, in such situations, we have to apply some arrangement, or we have to first make some arrangement after which we can solve them. Like in question number 21, we have studied ki what is the method of arrangement. अगर आप इस सीरीज को closely watch करते हैं, then you will find that the difference of two terms, consecutive two terms, see 3, 7, difference 7 minus 3 is 4. 13 minus 7 is 6. 21 minus 13 is 8 and so on. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा है, आपस में जीपी में है, सॉरी आपस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अगर हम 3 को छोड़ दें तो बाकी के सारे टर्म्स, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है पहला टर्म 7 और 3, माइनस ये कितना आया, पहला डिफरेंस आ गया 4 का. देन द नेक्स्ट डिफरेंस 13 और 7, तो 13 और 7 का डिफरेंस जब आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 का. फिर इसी तरीके से अगला डिफरेंस आएगा 8 का. तो इस तरीके से जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ऐसे क्वेश्चंस पे हम यूज करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मेथड ऑफ डिफरेंस. दिस मेथड इज यूज्ड in case of the series where we have to find the sum, when the series is such that the difference of successive terms are either in arithmetic progression or geometric progression. कि हमने जो subtract करने के बाद जो हमने नई सीरीज निकाली है वो आपस में या तो AP में होगी या तो GP में होगी. उस कंडीशन में हम यूज करते हैं द मेथड ऑफ डिफरेंस. क्लियरली इन दिस क्वेश्चन जो डिफरेंस हमें मिल रहा है दैट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So step by step try to understand the method. Let S equals to the sum of the terms. Again we'll write S और हम टर्म्स को क्या करेंगे, एक पोजीशन शिफ्ट कर देंगे. यानी कि यहाँ पे हमने कोई टर्म नहीं लिखा है तो हमने 3 जो है वो इसके सेकेंड टर्म के नीचे इसका फर्स्ट टर्म, फिर इसके थर्ड टर्म के नीचे इसका सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, और हम उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. S माइनस एस इज 0. 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, माइनस किया तो 3 ही आएगा. 7 minus 3 is 4, 13 minus 7 is 6, 21 minus 13 is 8 and so on. और लास्ट में हमारे पास एक टर्म बचेगा माइनस T1. क्यों बचेगा, क्योंकि हमने अपनी सीरीज को एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया. इसी Tn को क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है तो वी कैन ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड एंड वील हैव Tn इक्वल्स टू 3 प्लस and the rest of the terms we can write in bracket. See, at this point of time we have n terms. बट एज सुन एज हमने 3 को बाहर ले लिया और हमने अपनी सीरीज को स्टार्ट किया है अगले टर्म से दैट इज 4, तो अब हमारी सीरीज में टोटल n-1 टर्म्स है. अगेन वी हैव 3 प्लस, आपको पता है कि ये AP में है, आप उसका सम निकाल सकते हैं. n-1/2 ब्रैकेट में 2a दैट इज 2 into 4 8 प्लस n-2 into डिफरेंस दैट इज 2. वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट एंड एज सुन एज वी सिंप्लीफाई इट विल फाइंड that the nth term equals to n square plus n plus 1. In the exercise 9.4 we have studied the sum of special series. तो वहां पे हमने summation n square, summation n और ऐसे करके फिर हमने summation n cube का भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो वही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे. Now sum equals to summation tn. We have the value of nth term as n square plus n plus 1. तो summation लगाएंगे उस पे from n equals to 1 to suppose some other value m or something like that. तो यहाँ पे अगर हमने ये चीज मेंशन नहीं की है तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ फाइनाइट समेशन की बात कर रहे हैं. फिर हम समेशन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. सपोज दिस बी n, दिस आई एम नॉट मेंशनिंग हियर
बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हम सम की बात कर रहे हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं है. कहाँ तक है? n टर्म्स तक है. तो समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n प्लस 1 हमने इसको अलग अलग कर लिया. आपको फॉर्मूला पता है कि समेशन n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. फिर अगला आपको पता है कि n प्लस 1 अपॉन 2 एंड द नेक्स्ट वन इज n. तो अब वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल हैव द सोल्यूशन एज n बाई 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5. The next question that we're going to discuss is question number 29. And the question is कि one person writes 4 letters to his friends and asks them, each one of them, to write 4 more letters. Each one of them will send 4 more letters. And this process will continue. Assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paise to mail 1 letter, you have to find the amount on postage when 8th set of the letter is mailed. Now clearly for the first time we have only 4 letters. Now the next time we have 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is 16 set of letters. Now again we'll have 64 set of letters because each person is sending 4 more letters. So 4 4s are 16, 16 4s are 64 and so on. 64 4s are 256 and so on. Like this we have a series. Obviously this series is in geometric progression where we have the value of first term, that is A, equals to 4 and common ratio 16 upon 4 equals to 64 upon 16 equals to 4. तो A की वैल्यू भी 4 है, कॉमन रेशियो भी 4 है. Now the total number of letters till 8th set. तो हमें पता है कि अगर हम n टर्म्स का सम निकालते हैं जीपी में, वो होता है Sn इक्वल्स टू A into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. Now here we have the value of n as 8 and the value of A and r is 4. So 4 to the power n minus 1 upon 4 minus 1, that is 4 by 3 into 4 to the power n minus 1. अब हमने अभी बताया कि n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो हम हर जगह पे 8 रख सकते हैं n की जगह. इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बट वील नॉट सिंप्लीफाई इट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो इट इज गिवन कि फॉर 1 लेटर द कॉस्ट इज 50 पैसे. दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 letter. Cost for 1 letter equals to rupees 0.50. So we have to find the total cost in the question. Total cost equals to the whole amount, this one, and multiplied by the total, multiplied by the cost for 1 letter. So we have 4 by 3 into 4 raised to the power 8 minus 1, and this is going to be multiplied with the cost for 1 letter, that is 0.50. Obviously you can simplify this. We have simple numeric values, so you're going to simplify this and then you're going to find the total cost, that is total amount on postage when the 8th set of letter is mailed.